Hello children, welcome to the online classes. Everybody will open their English book Marigold on page number 53. Today we will read a poem which is based on trains. Have you traveled on a train? क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? Read and enjoy this poem. Trains. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Carrying passengers, carrying mail. Bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars, all rushing on, through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. We'll read this poem again. Over the mountains, over the plains. Everybody will speak after me. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Let's read again. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Carrying passengers, carrying mail. Bringing their precious loads in without fail. Let's read this again. Carrying passengers, carrying mail. Bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars, all rushing on, through day and darkness, through dusk and dawn. Let's read this again. Thousands of freight cars, all rushing on, through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. अब हम इस पोएम में से न्यू वर्ड सीखेंगे. Are you all excited? We are now going to learn some new words. The first word is traveled. What is the first new word? Traveled. Do you know what is the meaning of traveled? Traveled का मतलब होता है यात्रा करना. क्या होता है? यात्रा करना. The next word that we are going to learn is trains. Trains का क्या मतलब होता है?
रेल गाड़ी। क्या मतलब होता है ट्रेन्स का? रेलगाड़ी। द नेक्स्ट वर्ड इज माउंटेन्स। माउंटेन्स का क्या मतलब होता है? पहाड़। माउंटेन्स का क्या मतलब होता है? पहाड़। द नेक्स्ट वर्ड इज रिवर्स। क्या आप लोगों को पता है कि रिवर का क्या मतलब होता है? रिवर का मतलब होता है नदी। क्या होता है? नदी। रिवर इज नदी। The next word that we are going to learn is passenger. Passenger is यात्री। Passenger कौन होता है? यात्री। The next word is mail. Mail का मतलब होता है डाक। क्या होता है मेल का मतलब? डाक। The next word is precious. Precious का मतलब होता है कीमती। क्या होता है? कीमती। The next word is freight car. थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है फ्रेट कार? फ्रेट कार को हम बोलते हैं माल गाड़ी। क्या होती है फ्रेट कार? माल गाड़ी, जिसमें सारा सामान जाता है उसे हम कहते हैं मालगाड़ी, जिसमें पैसेंजर्स नहीं बैठते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डस्क। सोचिए क्या हो सकता है डस्क? डस्क होता है जो दिन और रात के बीच का समय होता है। इसको हम शाम भी बोल सकते हैं और संध्या का समय भी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डॉन। डॉन कौन सा समय हुआ? जो कि रात और सुबह के बीच का हुआ, जब प्रकाश होता है। क्या होता है? जब प्रकाश होता है उसको हम बोलते हैं डॉन। जितने भी नए वर्ड्स आज हमने सीखे हैं उनको हम याद करने की कोशिश करेंगे। We'll watch this video again and again and we'll try to remember all these words with their meanings. Let's come to the worksheet number 2. The topic is trains. So you will write date here. Question number 1. Match the following. हमने क्या करना है? ये जो पिक्चर दी है, कल जो हमने वर्ड्स पढ़े थे, आज उसको देख के मैच करना है कि वो हमारी जो मैचिंग है वो ठीक हो। तो सबसे पहले पिक्चर किसकी है? हमारी रिवर। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ माउंटेन and the third picture is of freight car. So what you will do? You will match the picture to the words. So the first one is river. This is river. Second picture is mountains. So we will match here mountains. Third is freight car. You will match it here. So, question number 2. Write the meaning of the following words. जो ये शब्द नीचे दिए गए हैं, इनको आप क्या करेंगे? इनका मीनिंग लिखेंगे। किसमें? हिंदी में। पहले क्या वर्ड है? प्रेशियस। प्रेशियस क्या होता है? कीमती। उसके बाद है डस्क। डस्क क्या होता है? शाम के समय को डस्क बोलते हैं, जब सूरज डूबता है। डॉन का क्या होता है? थर्ड वर्ड डॉन, जब सूरज निकलता है।
उसको हम बोलते हैं डॉन। और मेल क्या होता है? मेल क्या होता है? डार्क, जो हम किस में भेज रहे थे? ट्रेन में। ये हमारी क्या थी? वर्कशीट डे 2 की। चैप्टर था ट्रेन्स। अब हम इस चैप्टर की जो वर्कशीट है बहुत नीटली करेंगे। नीटली करने के बाद हम इसको अपनी टीचर को सेंड करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 नहीं दिया, बट वी कैन मेक माउंटेन्स हियर। ट्राई टू मेक माउंटेन्स and fill green color here. So all the best. See you soon for the next in the next video. Bye bye.